Alright, so hello, hi, नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन। मैं आरती वर्मा और मेरी को होस्ट मिस ललिता पूरे जबलपुर स्मार्ट सिटी एवं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाला। सो थैंक यू सो मच गाइस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर गुरुवार को हम एक नई सीख के साथ आते हैं, कुछ नई लर्निंग्स के साथ आते हैं और हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर के साथ आते हैं। तो आज का गुरुवार का सेशन है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOPs पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले बिफोर गोइंग टू आवर मेंटर, सबसे पहले मैं ललिता को वेलकम करना चाहूंगी जो कि मेरी को होस्ट है और आज मेरी हेल्प करने वाली है हमारे मेंटर डॉक्टर निशांत के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाने में। सो वेलकम ललिता। तो थैंक यू आरती। जैसा कि आरती ने बताया कि अभी जो हमारा आज का सेशन है वो ESOP पे। ESOP हम काफी ज्यादा ये वर्ड सुनते हैं व्हेन इट कम्स अबाउट द कंपनी स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। तो आज का हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम आपको ESOP के बारे में काफी अच्छे से ब्रीफ कर सके और समझा सके कि ESOP क्या है। और उसके लिए हमने आज काफी एक्सपर्ट मेंटर को भी इनवाइट किया है। So, hello Nishant sir and welcome for the session. Hi, how are you? We are good sir, how are you sir? Am I echoing or you can hear my voice properly? आपको आवाज आ रही है clearly? Yes sir, you are audible properly. Not echoing, right? No, it's not echoing. Oh, fair enough. ठीक है. All right. So before going ahead with this session, before giving stage to Mr. Nishant, Dr. Nishant, I'm so sorry. हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं फिर से एक बार, जिनको नहीं पता है। वैसे तो डॉक्टर निशांत ने काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे लिए हुए हैं, सेशंस हमारे लिए हुए हैं, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि डॉक्टर निशांत मेहता इज़ अ हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मेंटोर. He's also a prolific speaker. He's a traveler and an active leader in nation building projects. That's really nice, sir. And Nishant sir अभी recently appoint हुए हैं international partner as an international partner for India at WBAF, that is World Business Angel Investment Forum. So congratulations sir for this. And Nishant sir has a very unique educational background of possessing a bachelor's and master's degree in law while also being a chartered accountant and MBA in finance. So, Nishant sir, it is really great to have you here. And once again, welcome पूरी जबलपुर स्मार्ट सिटी और जबलपुर इंक्यूबेशन की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ मैं. Thank you for giving us your valuable time. And without wasting much of your time, I would like you to interact with our viewers now directly. Thank you. Namaste, welcome, and let's start with today's session जो है Employment Stock Option Plan. Employment Stock Option Plan क्या होता है? If someone can put it on the chat box, कोई चैट बॉक्स में डालना चाहता है कि उनके हिसाब से ESOP क्या होता है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑडियंस क्या सोचते हैं ESOP के बारे में. If anyone want to write it on a chat box. So Aarti, I will ask you, आपको क्या पता है ESOP के बारे में? आपके लिए क्या वर्ड होता है ESOP? सर, ESOP is basically जब employees अपनी कंपनी में स्टॉक्स खरीद सकते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग खरीद सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग को ले सकते हैं एंड उसके प्लान्स और कुछ बोनसेस ले सकते हैं. आई गेस दिस, और बाकी तो आप बता ही रहे हैं अभी. So ESOP जो आपने बोला कुछ हद तक सही है उसका मीनिंग, but I'll tell you what is exactly a ESOP. ESOP is something, why ESOP are given, very important question, to retain employees. You're making the employee a part of the ownership of the company. आप अगर एक जगह पे काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटी और आपके दिल से काम करने का एक जो टैलेंट रहता है या क्रिएटिविटी जो होती है वो एक लिमिटेड रहती है. यही चीज अगर मैं आपको ESOP दे रहा हूँ, आई एम मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय
to become a part कि you are a owner, you Right. are a Right. part of my company, and the growth is as the company grow, you automatically grow. तो हम लोग Right. हमारे जो Right. शेयर कैपिटल है वहां से एक सर्टन पूल बनाते हैं शॉप का, जो हमारे की एम्प्लॉय जो हमको लगता है कि रिटेन करना है उनके लिए हम लोग एक डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप इन द कंपनी, प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस प्लान करते हैं। आपको पता है डिविडेंड क्या होता है? जितने आपके पास शेयर है उसका एक परसेंटेज आपको डिविडेंड मिलता है, तो इट इज लाइक अ प्रॉफिट शेयरिंग। और बोनस, जैसे Right. आपके बोनस शेयर हुए तो ऑटोमेटिकली आपको बोनस शेयर मिलेगा। तो आपकी सैलरी तो Okay. कंटिन्यू है, सैलरी में नो ब्रेक। Right. इन एडिशन टू Okay. दैट आपको ईसॉप देते हैं। व्हाट वी डू इज बेसिकली ईसॉप इज टू मेंटेन द टैलेंट Mm-hmm. ऑफ द कंपनी, बिकॉज Okay. एनी कंपनी नो मैटर हाउ बिग, इवन इट इज अंबानी, अडानी और निशान दत्त मेहता इन कंपनी, Mm-hmm. टैलेंट बगैर, मैन पावर बगैर योर कंपनी नथिंग। Mm-hmm. Now we have two beautiful women who are the talent of Satna, Aarti, and Lalita, who are there So to run Jabalpur. the organization. Jabalpur. So they are Jabalpur. there, Jabalpur Yes. incubation से जो यहाँ पे motivate करके inspire करते हैं and get keynote people and speaker to run the Jabalpur incubation center. The success of Correct. Jabalpur is because of the people who are working behind it. इसको हम लोग बोलते हैं कि Correct. Right. मोटिवेशन एक देने के लिए हम लोग इनको ईसॉप देते हैं। और ये ईसॉप एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय होती है। फॉर एग्जांपल अगर बीएससी में कोई लिस्टेड है रिलायंस का शेयर, तो आज अगर 2,500 है 2,600 के रेट पे है, मैं मेरे एम्प्लॉय को उनको 10% डिस्काउंट पे दूंगा, विच इज लाइक अ पर्क वैल्यू। करेक्ट? आर यू गाइस यू विथ मी? आरती स्क्रीन इज फ्रेम, आई डोंट Yes. नो। ओके, सो एक Yes, स्पेसिफिक sir. प्राइस पे हम लोग स्पेसिफिक डेट पे देते हैं आपको, और आपको एक ब्लॉक करके देते हैं कि आपको एक परसेंटेज मिलेगा वो टाइम पे। Now the percentage will be divided into number of year you sustain in the industry or in the company. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ब्लॉक किया कि मेरे को 3% देना है आरती को Mm-hmm. ऑफ निशान मेहता इन कंपनी, सो मैं आपको 3% इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करूंगा, आपके नाम पे ब्लॉक रहेगा। एवरी ईयर वन Okay. थर्ड आपके नाम पे होगा, जहां पे आप वन थर्ड को बेच सकते हो, because that is Okay. technically giving you a motivation to continue in the company and a loyalty Right. factor from the employee who are an asset to the company. Okay. Okay. Everything Right. in a ESOP Mm-hmm. has to be as per the company act। जो हमारे कंपनी एक्ट है Mm-hmm. 2013 का, 2017 का, जितने भी Mm-hmm. अमेंडमेंट होते हैं वहां पे ईसॉप का Mm-hmm. एक पैरामीटर रहता है, एक लॉ रहता है, उस हिसाब से बैठ के हम लोग उनको ईसॉप देते हैं। अच्छा। ठीक है? ओके। अब यहाँ तक अगर हाँ किसी जी। को कुछ सवाल है तो मेरे को पूछ सकते हो, तो मैं आगे फिर उसके आगे आपकी इजाजत से आगे बढ़ूँ। सर फिलहाल तो अभी कोई सवाल नहीं है, तो हम नो आगे वरी, बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यस। आगे बढ़ता हूँ। ओके, यस। एक हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक शेयर देते हैं, पीरियड के लिए देते हैं, ऑप्शन देते हैं, जो मैं आपको पहले से बता चुका। और एक प्री वेस्टिंग पीरियड रहता है जहाँ पे उसको एक 3 साल के लिए या 5 साल के लिए काम करना पड़ता है, और एक सर्टन प्राइस पे देते हैं। एंड द प्राइस इज ऑलवेज अ डिस्काउंटेड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट में लिस्टेड है ओके। अनलिस्टेड, एक वैल्यूएशन के हिसाब से एक वैल्यू आती है कंपनी की, वो वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस में एम्प्लॉय को देते हैं, बिकॉज ये मेरे एम्प्लॉय हैं, ये मेरे टैलेंट है, ओके। मेरे बंदे लोग हैं, मैं इनको एक डिस्काउंट में देता हूँ, बिकॉज दैट्स लाइक अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी टू मेक द यस। एम्प्लॉय सस्टेन इन द कंपनी। ठीक है, राइट। ओके। हम नेक्स्ट यस सर। स्लाइड पे जाते हैं। Why they do? Highly quality employee, like we have good high quality employee like Aarti and Lalita, and we want them to be continuing with Jabalpur Incubation Center for a long time. What is something an employee look to sustain in a company? Can I have something from you, Aarti? आपको क्या लगता है आप कोई कंपनी में क्यों सस्टेन करोगे? सर उसको ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स करेक्ट, ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस ऑफ कोर्स। करेक्ट। एक अथॉरिटी मिलेगी, ओनरशिप मिलेगी, राइट, एक अच्छा हम्म, इन्वायरमेंट मिलेगा। और एक जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन एक सेटिस्फेक्शन, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और सेटिस्फेक्शन कब होती है? 3 चीज से, आपके बॉस अच्छे हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, और सैलरी इज इम्पोर्टेंट, सैलरी शुड बी गुड इनफ। यस।
And if you Yes. combine a salary with a ESOP, which is a combination of a ownership plus employment, there is not a single employee who will leave the association, because you leave an association or organization only when you're looking at growth in the company. और Right. आपका ग्रोथ तो हो रहा Right. है, इसके लिए हम Right. लोग क्या चाहते हैं एज एन एम्प्लॉयर, हम चाहते हैं कि हमारे की एम्प्लॉय रिटेन हमारे साथ रहे लॉन्गर द एम्प्लॉय. इट्स बेटर फॉर द कंपनी बिकॉज आई डोंट नीड टू टीच देम. दे ऑलरेडी नो देयर Yes. जॉब, दे नो हाउ यू वांट टू डू इट. इसके लिए हम उस हिसाब से Yes. करते हैं. Okay. मोस्टली आईटी कंपनीज और जैसे भी नए जो Mm-hmm. स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे एट्रीशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है. पीपल लीव Correct. विथ. हाउ डू आई Correct. सस्टेन देम? बाय गिविंग देम अ ESOP. ESOP. बिकॉज Yes. मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं रहते, तो मैं आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता हूँ. सो आई बार्जिन Mm-hmm. एंड आई मेक अ पैकेज वेयर आपको सैलरी मिल रही है प्लस आपको स्टॉक मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पनसेशन प्लान जो बोलते हैं, जो आपको कॉस्ट टू द कंपनी, CTC जो आपके टर्मोलॉजी में होते हैं, इट इज एन अट्रैक्टिव प्रोडक्ट फॉर एनी एम्प्लॉय टू सस्टेन इन द कंपनी. And for Okay. me, if my employees sustain, automatically my growth will increase. Correct? Right. 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 सर आई हैव वन क्वेश्चन. जैसे आपने सीटीसी के बारे में बात करी है, तो अगर हम ईसॉप किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वो सीटीसी में इंक्लूडेड रहता है? Yes, they count it as part of ओके. your part B as a perquisite. If you look at your ओके. salary certificate, अगर आप देखते हो उसमें पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, तो एक पार्ट में ESOP का यस. पोर्शन दिखता है वहाँ पे. ओके. ओके. Because technically it's like a ऑलराइट. monetary for value for you. जब आप वेस्ट करते यस. हो तब यस. उसको वैल्यू काउंट होता है, बट आपके उसमें लिख जाता है कि आपके नाम पे इतने शेयर्स एलोकेटेड है. ठीक है. ओके. ओके. राइट. आज की तारीख में आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल व्हाट इज गोइंग ऑन विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. ओके. MLAs, they are like the manpower to sustain any government. यस. Correct? And if they are यस. not there, then there is a crisis in the यस. legislation. The same thing goes for यस. any company. If my employee doesn't sustain, I can go boom. And that's the reason the ESOP is a very critical part to retain any employees, any talent, and especially the high quality employees, which are very important. ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. राइट. हाँ जी. टाइप ऑफ ESOP रहते हैं. एक इश्यूएंस रहता है, एक अनलिवरेज रहता है और लिवरेज रहता है. अब लिवरेज में क्या रहता है, बोरोड फंड यूज होते हैं टू बाय द शेयर इन द कंपनी फ्रॉम द करंट ओनर्स. मैं ओनर हूँ. आज कंपनी का शेयर कैपिटल लिमिटेड रहता है 5 लाख शेयर. अब 5 लाख शेयर में से अगर मेरे को एम्प्लॉय को देना है, या तो मैं मेरे शेयर से डाइवर्ट करूंगा, या फिर मैं बोरो फंड करके मेरा कैपिटल इंक्रीज करके वहां से मैं डाइवर्ट करूंगा. करेक्ट. राइट. 5 लाख शेयर में से 5 लाख पूरे प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास है. एम्प्लॉय का कोटा कहाँ से क्रिएट होगा? या तो मैं मेरा शेयर कैपिटल बढ़ाऊंगा, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मैं मेरी कंपनी के शेयर को डाइल्यूट करूंगा. मेरे प्रॉफिट, मेरा जो होल्डिंग है उसको मैं डाइल्यूट करके मैं मेरे उसको दूंगा. सो टेक्निकली वेन एवर एन एम्प्लॉय बाई, ही बाई द शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. फ्री में नहीं मिलता है. इट्स अ वैल्यू, बट द वैल्यू विल बी लेस देन द मार्केट वैल्यू. तो अगर 2,500 का रेट है तो ओके. 2,500 के सामने आपको 2,400, 2,300 या 2,000 में मिलेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर. बट 2,000 तो ओके. आपको देने पड़ेंगे. तो 2,000 इंटू जो नंबर ऑफ शेयर है 100 शेयर, तो 2 लाख रुपया आपको करंट ओनर को देना पड़ेगा, तभी आपको जाएगा. करेक्ट. ट्रांसफर कब होगा? जब आप पैसे दोगे. राइट. तो लिवरेज ESOP में क्या राइट. करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ही आपको फंड करेंगे और बाद में आप धीरे धीरे हम लोग को रीपे करते रहोगे. करेक्ट. ओके. ईएमआईस में. करेक्ट. सैलरी में से एक पोर्शन राइट. जाता है टू बाय द शेयर्स. एक रहता है अनलिवरेज ESOP. वहां पे क्या रहता है, you don't buy, I give you in part of, in lieu of the consideration of the services you give. I'll give you a best example. एक स्टार्टअप कंपनी है. स्टार्टअप 3 चीज पे चलती है. एक टेक्निकल, एक टेक प्रोडक्ट अगर बना दो आप, एक CFO, एक फाउंडर. ठीक है. आज इनिशियली कोई पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता है स्टार्टअप, तो वो टेक पार्टनर को बोलता है आप प्रोडक्ट बनाओ,
आपकी फीस हाँ. अगर 10 लाख है, आप 10 लाख मुझसे मत लो, मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं आपको इक्विटी देता हूँ कंपनी में. Again, it's technically a part of a ESOP, but technically, if it is a founder, then it doesn't go into ESOP. If it is an employee, it goes in a ESOP. वह मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10 लाख आपकी सैलरी है साल की, आप 2 लाख सैलरी लो, 8 लाख मैं आपको ESOP देता हूँ, हम मिलके कंपनी को ग्रो करेंगे. करेक्ट? Okay. Okay. Right. मेक Right. सेंस? एंड द लास्ट इज इश्यूएंस ESOP. जैसे नया शेयर इश्यू किया हम Yes. लोग ने, और वहां से हम लोग ने ट्रांसफर किए, उसको इश्यूएंस ESOP बोलते हैं. One, Okay. borrowed fund. Second, in lieu of consideration. Yes. And third is issuance. Yes. तो ये 3 टाइप के Uh, ESOP रहते हैं. क्लियर? Sir, I have one doubt. Yes. हाँ बोलिए. Yes, sir. I have one doubt कि जैसे अगर मैं स्टार्टअप चला रही हूँ, ठीक है, मेरे जो भी एम्प्लॉय हैं, तो why they would take leveraged ESOP? लाइक वो अपना पैसा देकर मुझसे इक्विटी क्यों खरीदेंगे? उनको अगर सी स्टार्टअप हैज लॉट ऑफ रिस्क, हमें नहीं पता कि वो 2 साल बाद 5 साल बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वेयर दिस लेवरेज्ड ESOP इज यूज्ड बेसिकली, माय क्वेश्चन So इज. I'll tell you, even a startup has a leverage ESOP because you join a startup only when you believe in a startup. Correct or not? Why will Okay. an employee join a company? And a startup always work on a valuation plan, because even he knows that the startup is going to raise fund as and when the company needs funds. So when you raise fund, you automatically know the valuation of the company is going to increase. आज मैं अगर 1,000 करोड़ की कंपनी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको 2,000 करोड़ की कंपनी बना के ही आगे बेचूंगा ना, वैल्यूएशन तो उतना ही करूंगा ना. सो ऑटोमेटिकली मेरा राइट. लेवरेज ईशॉप विल बी हायर. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई राइट. आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको इक्विटी दे रहा हूँ टेक्निकली. Instead of selling it to the investor, I'm telling you, you come at a lower rate because you are a family friend and an employee. आज फैमिली फ्रेंड को डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं. इसके राइट. लिए लिवरेज ईशॉप वैल्यूएबल रहता है. ओके. ओके. But a leverage value ESOP will be only if the startup has already done one round of funding. सीड फंडिंग में कोई राइट. लेवरेज ईशॉप पे जाता नहीं है. आप समझे? वो जाएगा अनलिवरेज हाँ जी. ईशॉप हाँ पे. जी. हाँ जी. जब हाँ आपके जी. पास हाँ एक जी. राउंड ऑफ फंडिंग हो गया, तो कंपनी का एक बेस क्रिएटेड है कि द राइट. सेकेंड राउंड विच इज राइट. नोन एज राइट. द सीरीज सी और अ सीरीज बी, automatically the valuation is going to go higher and not lower, unless it's like a disaster like a राइट. Paytm or Zomato. But still, Paytm and Zomato still Yes. is sustaining right now also. And the valuation of the Yes. IPO, even Yes. you know how it was. So that's the way. ठीक है? Okay. Okay. Any other Yes, sir. questions till now? No, sir, not yet. ठीक है, I'll move ahead. Yes, sir. Benefit of the ESOP. So basically, for example, now Aarti is getting a salary of 10 lakhs. Example, okay, and I tell Aarti, you take a salary of 7 lakhs. I'll give you 3 lakhs worth of salary in ESOP. Now, after 1 year, my company goes for a next round of funding. Automatically, the 3 lakhs might convert into 30 lakhs, 15 lakhs, or 10 lakhs. Correct? Yes, correct. So, what it gives you? An additional source of wealth creation. Correct? Now, I'll Yes. give you an example of boosting your retirement portfolio. So, I remember I was working with Okay. Citibank as an intern. So, that time, Citibank shares were not listed, but many of the secretaries, employees were given ESOP, preferential shares. Okay. And I Okay. know few of the secretaries who I know, they actually retired for the company when the shares were listed. And the amount of the retirement portfolio was amazing. Amazing is a small one. It was like awesome. More than what they would have even worked for 20 years, they won't have not got that money. That's the power of an Okay. ESOP. You never know what the money can go anywhere. So it's technically become like a retirement portfolio for your children, for your wife, for your hubby, for your employment, for your own family. So it's an Right. additional Right. source of wealth. It boosted your retirement Yes. portfolio, and It's it kind makes of the employee investment. correct.
It is like Yes. investing in a stock market in a long term investment. Yes, long-term And investment. you prefer better employment engagement. Okay, Correct? okay. So can we give this? So can we give this? Leverage to the employees कि अगर आपको ESOP suppose 5 years के बाद जितना भी amount हमारा है मतलब जितना भी amount है हमारा उसको हमको निकालना है. So can we do that? Yeah, Can we yeah, give yeah. You that give a leverage to the exit plan employees? also, ना. So the normally ESOP में 3 साल का exit plan रहता है, 3 साल तक लॉक इन रहता है, उसके बाद में exit plan होता है. Hmm. Yes, Every exit plans. Okay. company has it. Okay. It's simply like SIPs. मतलब the concept is like SIPs more kind of. I will अगर आप call it. employee की तरफ से. नहीं तो I won't call it a SIP. I will call it as a long term investment. लाइक फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर बिफोर अगर मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता, मैंने इंफोसिस में किया था, विप्रो में किया था, वो आते रहते ना थोड़े से आजकल, तो वही चीज होती है. तो टेक्निकली इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन द Okay. कंपनी वेयर यू आर ऑलरेडी वर्किंग, सो यू डेफिनेटली नो हाउ द कंपनी इज गोइंग. So that's the reason you Yes. are investing in the ESOP with a better employment engagement. Yes. Correct? Okay. Any Okay. questions till now? Right. Uh, no, sir. I don't have any question. Lalita, if you have any questions. Any questions from the audience? नहीं सर जो भी questions थे I've asked you. Okay, fair enough. ठीक है, I'll go to the next slide. Yes. Yes, sir. Taxability of ESOP. I don't know whether you guys really want to understand the taxability of a ESOP. No, sir. So Our let me startups give wants you a to little bit. understand थोड़ा that. सा मैं टच कर लेता हूँ उसमें. तो बेसिकली जब शेयर एलोकेट करते हैं उस टाइम में जब आपको एक्सरसाइज करते हैं completion of the vesting period, that is the time when the tax of ESOP is calculated. और जब सेकेंड टाइम जैसे आपने बोला कि 3 साल बाद मुझे ये बेचना है अलॉटेड शेयर्स, दैट टाइम कैपिटल गेन्स इज देयर. सो यू हैव टू फैक्टर्स. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आपको वेस्टिंग का राइट मिलता है, अलॉट नहीं, वेस्टिंग का राइट, जैसे 1 ईयर के बाद मैंने आपको बोला कि 30% शेयर आपके खुद के हो गए, तो जब वेस्टिंग का राइट हुआ वो 30%, दैट टाइम दिस इज लाइक अ टेक्निकली अ पर्क value to you in lieu of salary. So definitely it is a taxable perquisite value. Correct? सेकेंड टाइम जब आप Right. बेचोगे तो Right. कैपिटल गेन्स हो जाएगा. बिकॉज जितना Right. टाइम जितने रेट पे आपको वेस्ट किया और जब आपने बेचा, वो जो डिफरेंस रहता है उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं. Two Okay. types, two stages. First, vesting, not Right. allotment, and second is when you sell the shares. Clear? Right. 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 That's it. Yes, sir. Okay. Okay. Intercompany ESOP is a very interesting thing. This is something Intercountry. where Okay. ESOPs are given to the parent company to the employee of the group. मतलब कोई इंटरनेशनल कंपनी अगर दे दी है ESOP, तो सिमिलर टाइम में DTA आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट अग्रीमेंट, जहाँ पे आपके दो कंट्री के बीच में एक अग्रीमेंट रहता है कि ये एक सब्सिडाइड और डिस्काउंटेड रेट पे टैक्सेज होंगे, और प्लस जो भी टैक्सेशन लगेगा उसका जो टैक्स दूसरी कंट्री में दिया उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. दैट इज नोन एज इंटर Okay. कंट्री ESOP. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ Citibank share, Mm-hmm. I cannot sell Citibank share because they are not listed in India, but they are listed in Nasdaq. I'm Yes. going to sell there. When Okay. you sell a share there, you will have a capital gains again there. There will be a taxable liability and everything. But it will be taxed in Right. India also because world income is taxable. Yes. 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 तो जो डिफरेंस जो Okay. आपने वहां पे टैक्स भरा है और यहाँ पे जो टैक्स है उसका Uh-huh. डिफरेंस आपको भरना है. रिलीफ अंडर Hmm. सेक्शन 90. Okay. Okay. तो दैट इज ESOP व्हेन इट इज इंटर कंट्री ESOP बोलते हैं हम लोग इसको, जहाँ की आपके शेयर Okay. आपकी कंट्री में लिस्टेड नहीं है, दूसरी कंट्री में लिस्टेड है. ये नॉर्मली फॉरेन बैंक्स या फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन कंपनीज के साथ होते हैं. Okay. ठीक है. Okay. हाँ जी. It's the same thing. Key point in the country ESOP. I don't think so we should go into it. Double taxation, which I've already told you, fair market price between option price. और जो भी टैक्स आपका Yes. कट हुआ है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. Okay. Okay. इसमें एक चीज रहता है कि कैश फ्लोज विच की पॉइंट्स कवरिंग द इंटर कंट्री इज समटाइम द एम्प्लॉय गोज ऑन अ डेप्यूटेशन टू द फॉरेन सब्सिडी.
तो पार्टली टैक्स वहां पे देगा, पार्टली यहाँ पे देगा, and depends on the number of services rendered. On that basis, your residential status in the taxation come into place. And that time you will see how much is a sustainable Indian tax liability and the foreign tax liability. So you pay tax to both the liability, the parent company and the Indian company, but you get a benefit of the additional tax bed. Again, the DTA is a similar thing. Fair enough? Okay. Yes, sir. All right. Now, why ESOP is a little bit complication and why you need an expert like me or other people who actually advise how to draft a ESOP plan. So drafting a ESOP plan is not a cakewalk. It's a little bit complicated because there are a lot of things involved: preferential, vesting, allotment, selling, and how much is it. Okay. Sometimes they have a Okay. dragon policy also. So I'll Okay. explain you what are the issues. It's a complex rules and regulations which works Okay. only towards a focus of how does the ESOP work. Okay. Okay, and there are a Okay. lot of little bit risk issue also involved. Sometimes the company doesn't work. So sometimes it's a risk for the employee and the company both. But that is something you take a risk. Like it said in scam में risk है तो इश्क है. Similar type thing. Whenever you want to go with a startup, you need to little bit take a Yes. risk and it works for you mostly. There are very bad Yes. times when a startup goes boost. But then technically that's the hit you are already ready to take it mentally. Plus setting Okay, up sir. a ESOP will include a lot of costing. You have a third party administration. You have a legal cost involved. You have a trustee involved. Okay. You need to understand Okay. there are a costs involved with the company and not to the employee. But I'm talking right now from part of both the point of view where a company also hit an expense when you draft a ESOP plan. I've been doing ESOP Okay. plan for many years. It's a very complex document, but it is very good because I have seen many of the employees' sustainability in the company because of that. And they can become a millionaire Okay. and a billionaire just because of the ESOP they hold with them. And it's a live thing which I've Right. actually seen in the case studies. Okay? Okay. 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 Now we'll do And a of case course, study. when people sustain, of course, when employee sustain, तो आपकी productivity एक तरीके से बढ़ ही जाती है क्योंकि हर दिन आपको किसी नए को ट्रेन नहीं करना पड़ता है, एक पैटर्न Correct. चेंज नहीं होता है काम करने का. So Exactly. like that. So it's always better when your employees are sustainable because employee Yes. bagair none of the company, be it a Apple or a Samsung or a Adani or a Reliance, cannot sustain. The Exactly. head Exactly. hunko never works. His power is delegation and the money he creates on the table. Rest the functioning is Exactly. always because of the success of the employees of the company. I always True. dedicated True. my success to my employee, my team. Without them, I am nothing. So Yes. Obviously. so we'll go to the next slide, which says that let's have a case study now. So, for example, Coho Partner was founded in '99, located in Berwyn, PA, a leading investment management company who helps to advise into this thing. And the situation was that they want to provide ownership to the entire workflows to provide liquidity to the partner. Technically, when you give to the entire workflow, you get some money at the share value at a discounted rate. Okay, and we Okay. make a minority stock ownership plan. So the minority shareholder also have a power in the company. Okay, Okay. so we when we draft ESOP, you have a minority shareholder because ESOP technically become like a minority shareholder because normally the ratio of a ESOP is 10 to 15% of any company. Technically a minority stakeholder. Combining that, if there is a flaw in the company or a misoperation by the directors, they can actually file a case against the company. So this was a case study where they actually thought that we need to have a ESOP plan to sustain the company because the company was going through a very bad phase. And they understood that Okay. liquidity is something we need. And we need to make sure that we establish a minority owned ESOP. It's technically offloading your equity to your own employee. And it becomes a help for the Right. employer to sustain, to have the Okay. loyalty of the employment, and the employees work like a family, Right. and no one Right. cheats in a family. If you work for your own
parents, family, wife, husband, you will work with more dedication and love for the company and for yourself. And this is what an Right. ESOP bring into picture. So the solution was Right. always to make sure that you have people involved and engaged Right. to Right. make sure that you Right. Right. sustain in that. Correct? Right. 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 You get ownership, like employee get Correct. ownership then, मैं और हमारी ज्यादा कंपनी की मन तरफ से लगा के काम करता है। करेक्ट हाँ जी। करेक्ट तो मैं मन लगा के जी। काम करूँ ठीक है so thus lastly I want to conclude that ESOP is a great way to build the foundation of any financial retirement and the freedom for the employees, a motivational tool for the employees to stay in the company and work toward the goal of the company. Employees feel pride because they are an owner and not an employee of the company. They have a proud feeling that I'm an owner in the company. Even if my stake is 1% or 2%, I still am a power. And company की success उनको अपनी success लगती है. You throw a party when you're successful, when you Right. got a promotion. Similarly, Right. when the company is Right. growing faster and you are an owner, you feel proud that yes, I have a power to do it. So the employer makes sure that the key employment, key management will always have a desirable candidate and they will make sure that you have an ESOP plan for them. Clear? ओके। ओके। यस सर। सर एक मेरा छोटा सा डाउट था कि Yeah. अगर सपोज आई एम अ स्टार्टअप एंड आई वांट टू प्रोवाइड ईसोप टू माय एम्प्लॉयज एंड आई हैव 2 to 3 एम्प्लॉयज एंड तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? मतलब कितना शेयर उनको देना चाहिए, कितना इक्विटी उनको देना चाहिए, एंड हाउ टू कैलकुलेट इट बेसिकली? So what you do, you look at the current valuation of the company on the which basis valuation you are trying to get a new Series A or Series B funding. Okay, valuation करना बहुत जरूरी है and you get an external valuer to value the company. Once you do ओके। the valuation, you come to know what is the percentage of the company. You block a 10% of employee. You see who are your key employees, and based on what the work they get on the table, you delegate or you allocate the shares to them. Make ओके। sense? ओके। Because यस। you मेक automatically सेंस। get some benefit when you are a owner. You automatically have the retention of your key employees. Now the key employee can retain only either money or you have fund or you become an owner. Correct? अगर मेरे को या तो राइट। पैसे से मेरे को सस्टेन करोगे या मेरे को ओनरशिप दे के दोगे. राइट। राइट। When राइट। I don't have much fun, then I will always give you a this thing. Correct? Right, right. So that's the And way it suppose works. okay, okay. And suppose 3 साल का लॉक इन पीरियड है एंड Correct. समवन उसके बाद एग्जिट प्लान स्टार्ट होते हैं एंड समवन वांट्स टू टेक एग्जिट बिफोर 3 years लाइक तो उसको वो अमाउंट अपन नहीं देंगे? I mean, नहीं तो what should be the plan before 3 years? If so someone wants to before 3 years, if someone wants to leave. no, so ideally you give one third allocate of the shares. For example, I allocate 10,000 shares to Aarti. So I won't give you the 10,000 shares immediately. Once you complete 1 year, I'll give you 3,000. You complete second year, I'll give you Okay, 6,000. Third year, I'll give you the okay, entire money, and you will get a okay, chance to sell the 1,000 share in the okay, second year. So we try to okay. sustain and retain the employee year on year. मैंने आपको 1,000 किया तो मैं 1,000 इमीडिएटली आप बेच नहीं पाओगे, नेक्स्ट ईयर आप बेच पाओगे. Yes, so that's what my doubt is कि अगर कोई एम्प्लॉय सस्टेन कर ही नहीं रहा है, सपोज ओके उसने So ईसॉप ले दिया sustain, एंड correct. So what do you do when an employee doesn't sustain and he wants to leave the company? Then obviously they will buy back at a lesser cost because technically he is not committed to the years he should be committing, and technically whatever the difference in the valuation that day, normally the difference they pay or they pay the money he invested. फॉर ओके एग्जाम्पल उसने अगर 2,000 में खरीदा है तो 2,000 में उसको बायबैक करेंगे अगर उसने सस्टेन नहीं किया बिकॉज दैट इज अ लॉक इन पीरियड ओके सो लॉक इन यू नीड टू रिस्पेक्ट द लॉक इन पीरियड अदरवाइज डिफिकल्ट ओके हो जाता है ओके 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 मेक ऑलराइट। सेंस Yes, sir. Definitely.
Lalita, do you have any questions? Yes, Aarti, I do have a question. निशांत sir, मेरा एक question था. When a company decides that they have to, launch their ESOP or give ESOPs to the employees, what factors they should determine so they have a position of win-win situations, and what are the major factors in there? You're looking for the company point of view. Yes, sir. So, for example, I will look at who are my key employees and always have a larger lock-in period to retain the company. And year and year, definitely the salary is going to increase. Salary पे block नहीं कर रहे हम लोग. तो सैलरी तो बढ़ रही है. हम लोग खाली ये बोलो कि आप जितना ज़्यादा सस्टेन करोगे आपको आपके ESOP की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी. So this is something I would, as an employer, will look at it. I want to retain my company. That's the reason I'm employing and giving them a ESOP to my employees. मैं उनको इमीडिएटली एलोकेट नहीं कर रहा हूँ. दैट्स द डिफरेंस. इफ आई इमीडिएटली एलोकेट इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. Right. अगर मैंने आज ही आरती को बोल दिया कि 10,000 शेयर आपको एलोकेट कर दिया एंड टुमारो शी लिव्स, आई मीन इट लॉस, राइट? That's where the employee will try to protect his own right, where he will key block it for a certain number of years. Normally in a share transfer or a VC investing agreement, again the employer normally have a dragon policy where the founder plus the key employee will never leave the company for a certain factor of years. Sorry, Aarti, we lost your voice. ड्रैगन पॉलिसी जैसे आपने बताया, तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ड्रैगन पॉलिसी के I'll बारे explain में. you what is your dragon policy. For example, Yes. when you company, a new investor come into picture, right? Now, who runs the show? The promoters and a few employees who run the entire show. अगर मैंने उस समय बाई करते वक्त मेरे फाउंडर एग्जिट कर लिए, मेरे की एम्प्लॉय एग्जिट कर दिए स्टार्टअप के, why will I invest into a company? Because my motive for investing in a company, a VC, is always to earn profit after 3 years. There is an exit plan ना. Right. 3 साल बाद मैं एग्जिट करूंगा, 5 साल बाद एग्जिट करूंगा. तो अगर मेरे Right. प्रमोटर जिसने बिल्डअप किए कंपनी, जितने की एम्प्लॉय ने बिल्डअप किए, अगर वो ही निकल गए तो फिर मैं क्यों करूंगा ये सब? Why will I give them equity? Correct. और why will investor invest? तो इन्वेस्टर बोलेगा कि ये 5 एम्प्लॉय, ये 3 फाउंडर 3 साल और कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में. उसके बाद में will they take a decision whether they want to sell their equity or not. They are not allowed to sell the equity. They are not allowed to leave the company. If they leave, there will be a compensatory allowance which they need pay to the company. Because technically the investor is buying at X amount, 10x of the value or 100x or whatever is the value, 5x, 2x, 3x, 10x. So he will not invest in a company where the employees are leaving. Correct? Right. Right. Because my Right. motto is Right. to Right. earn profit. I'm a VC. I'm here to earn profit. If I keep on exiting, then why will I invest into any company? Make sense? Right. That's known as a Yes, dragon sir. policy. Well, I drag the Okay. employee and the promoter with me. Okay, 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 okay. Sir, I have one more question. Like, Yeah. suppose I am the employee of one company. Okay. Now, Hmm. after 10 years or after maybe after 15 years, I want to leave that company. Okay. Hmm. Now, कंपनी के लिए आई एम गुड एम्प्लॉय एंड मैंने ईसॉप भी लिया हुआ है. अब 15 साल के बाद जितनी इक्विटी है वो, मतलब even after leaving the company I want You can that keep. equity, like, You so can keep. as a company. Okay, no, so as a company, is this profitable? So you give a lock-in. You can't hold an employee for a longer year than 3 or 5 or 10 years, not more than that. So you have an agreement mutually with them. If they say कि no matter how many years you are with us, if you exit, we will terminate your stock, and whatever the market value, we sell off your shares and give you the money. Even that happens. So they don't want the exchange of shares to go to a third party. So that time they will say, "Ki whatever is your earning, you take the money and leave. We are okay with it." And this also happens. Or they will say, "Ki you can keep the equity with yourself." Like Ashneen Gover of Bhim and the Bharat Pay. He technically still have the equity with him. Na? His equity has not been sold off. So there was a time there when they were saying, "Ki boss, you sell off the equity."
and he was forced to sell some of the equity, but not the entire equity. So Mhm, that happens. mhm. So he Okay, left the so but company. as a He was startup, sorry, yeah. as a startup, which option should be adopted? So you have a lock-in period, 5 साल maximum. उसके ऊपर you cannot sustain मतलब unless there is lot of funding happening, so automatically the dragon always will be there. So first round हुआ 3 साल बाद, second round हुआ, तब भी मैं dragon करवाता हूँ ना, और dragon में all the key employees sign on the agreement. So you are technically उनकी तो value बढ़ ही रही है ना, series B में हमेशा value बढ़ती है, घटती नहीं है. The valuation doesn't go down. So the employee automatically paper पे भी share है तो value तो बढ़ रही है ना उसकी. True, 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 true. That's the way it All works. right. Okay, okay, okay. All right. So these were a few my questions, and these were a few of the questions of the viewers. So आपकी तरफ से कंक्लूजन अगर हो गया है सर, एंड आई वुड लाइक कि आप एट द एंड कुछ दो लाइन बोले कि टू कंक्लूड दिस सेशन. So I would like to conclude in a session that as an employee, आप अपने एम्प्लॉयर पे भरोसा करो, कंपनी पे भरोसा करो, तभी आप ये कंपनी को ज्वाइन करते हो. So ESOP is a very good plan for you because as and when the company grows, you automatically grows. So it's a very good option for your retirement, for a value in creation, wealth creation, and it gives you a ownership pride, which Right. you might as an employee will never have a guts to even start your own company. But when you have an ESOP, you technically are owning a part of the company, and that gives you a pride factor. And the pride and an ego doesn't have a value; it's priceless. That's what I always believe in that. And Yes, that's yes. the And three as a key factors company, which should be there. Correct. As a yes, yes, company, I yes. will And as a always say company, that. you, Sorry. yes. You were saying something. No, sir. Sorry. I was asking. I was asking you as a company, what are the benefits? As a startup, what are the As a benefits? If you can company, for conclude it me, in a a benefit is my company cannot sustain without the manpower. We call it a talent management. Without that, it can true, never function. So true, for me, I will true. always offer a ESOP to my key employees, and I'll make sure I retain them after every valuation, every funding, and every time my company needs them. And the Correct. reason of Tata, Ambani, and Adani are successful is people have worked there for 20 years, 25 years, 30 years. There's a loyalty Yes, factor involved. yes, And we need this from yes, the people of our key talent people. And that's where we yes. believe in ESOP a lot. Yes, yes, yes. So, if I would conclude this session, like अगर आप startup हैं तो ESOP अपने key employees को definitely दे to sustain them, because of course आपको हमेशा change नहीं करना पड़ेगा, हमेशा employees को trainings नहीं देनी पड़ेंगी, employees आपके sustain करेंगे, which is the very crucial part Correct. for your success. फॉर योर सक्सेस. अगर आपके साथ कोई भी 5 साल 6 साल के लिए जुड़ा हुआ है और उसको एक ओनरशिप मिलती है, तो डेफिनेटली वो आपके कंपनी के लिए बहुत अच्छे से लॉयल होकर काम करेगा एंड अपना 100% देकर काम करेगा वो. For that is for sure to, and this is the best way I think to sustain, क्योंकि इसमें इमीडिएट भी आपको फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एंड after few years, like 5 years or 10 years, employee also get a good amount of money, of course. So finance is always a motivation. It is a motivation factor. It is the highest motivation factor, I think, for the employees. So thank you so much, Nishant sir. Lalita, if do you have any questions, or should we end this session? No, Ati, but before we end this session, I would like to add on one line in your conclusion that it is going to be a very cost effective method for a startup who has some financial issues, and it is going to be a great to measure a loyalty and a motivation and a satisfaction between employee and employer. So that's it, and thank you, Nishant sir, for uh, briefing us about ESOP in a 1 hour. And thank you so much, and thank you, Aarti, for having us here and hosting this session.
यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच निशांत सर। एक्चुअली मुझे अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे ईसॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब आपने पूछा तो आपको समझ में आ गया होगा। बट दिस वाज रियली अ नाइस दिस वाज रियली अ नाइस सेशन। पूरे 1 घंटे में मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ईसॉप का समझ में आ गया है। इतना तो समझ में आ गया है कि हाँ, अब मैं किसी को ब्रीफ दे सकूं कि व्हाट इज ईसॉप। एंड फॉर एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको डॉक्टर निशांत से मेंटरशिप चाहिए है, उनसे कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वाया जेआईसी मैनेजमेंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल लेट यू कनेक्ट विद डॉक्टर निशांत। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी मेंटरशिप की ज़रूरत है, सो लेट अस नो अबाउट इट। जेआईसी इज ऑलवेज रेडी टू help you out. And with your permission, Nishant sir and Lalita, should we end this session now? Yeah, yeah. Yes, Thank you. Aarti, Thank you. before that, can you All right, please all right. Thank you, sir. discuss about Yes. the poll? Yes, once again, next poll will be generated tomorrow. It will be displayed on the screen tomorrow. I will be sharing you links on our WhatsApp group, and it will be there on the website as well. आप वहाँ पे जाके आपको next session किस टॉपिक पे चाहिए है, किस टॉपिक पे मेंटोरशिप चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। वो पोल आपका मंडे तक रहेगा। मंडे को हम उसको कंक्लूड करेंगे, and next session will be on that topic also, as per the startup's choice and our viewers choice. So don't forget to poll, don't forget to vote on whatever topic you want. तो हम नेक्स्ट सेक्शन उस पर रखेंगे with your choice. Till then, take care and have a good day, have a nice evening. Thank you so much. Thank you.